Hello guys, we are going to study three topics in this lecture. So which are they? The first one is Coulomb's law and gravitational law. In this point, we are going to study the statements and the laws along with their formulas. And second one, the resonant frequency. The resonant frequency and RL circuit, these are the both 2 points in a single unit. So we are going to derive an expression for these both 2 points. So let us start with the first point. The first point is Coulomb's law and gravitational law. So our first point we are going to demonstrate is the Coulomb's law of electrostatics. So Coulomb's law and gravitational law are similar to each other. So first we see the Coulomb's law. So what does Coulomb's law says? It is totally based on the electrostatics. So electrostatics मतलब क्या? मतलब इसमें कुछ तो है जो कि करंट मतलब करंट क्या? It is nothing but the flow of charges. मतलब current I equals to Q upon T means the amount of charge flown in per unit time. It is called as current. So which are the charges? अब charges कौन से जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन and etc. As we know, neutron is not a charge because it is a chargeless. So Coulomb's law is totally based, it's fully based on the, means it is based on the charges. Q is nothing but the charge. So it gives the relationship between the two charges. So how is it? So let us see. It is a force. It is a force between the charges. So which force takes place in between the charges? So let us have a look. If there are both light charges, then there is a force of repulsion in between them. And if both are unlike charges, then there is a force of attraction in between them. So it is much way simpler. As we know, if north pole and south pole comes together, then there is a force of attraction. Simply, if plus and minus comes together, then there is a force of attraction. And if same is like charges mean the charges having same sign are came together, then there is a force of repulsion. जैसे कि हम यहाँ भी देखा कि forces कितने टाइप के होते हैं, मतलब forces either it may be force of attraction or force of repulsion. इसमें if there are two dependent charges, अगर एक ही सिंगल चार्ज हो तो फिर उसका कुछ फोर्स किसी दूसरे फोर्स चार्ज पे पड़ेगा क्या? नहीं. तो फिर यहाँ पे हमें दो चार्जेस होने चाहिए, मतलब कितने? Q1 and Q2. So let us assume this is a system in which Q1 is a charge and Q2 is the second charge. So both are the charges having force, either it may be attraction or repulsion. Means simply the force of attraction or repulsion means either, मतलब एक तो ये बोल सकता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं. इसमें ये फोर्स किन दोनों में है? जो कि Q1 and Q2 टू चार्जेस, ये जो टू चार्जेस है. तो फिर हम पहले इसका और इन दोनों में मतलब जो Q1 और Q2 का जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस क्या है? R. तो फिर हम देखते हैं मतलब क्या? The force of attraction. So simply, so we have to derive. तो फिर Coulomb's law का एक सिंपल लॉ है, वो बताता है कि force is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square. मतलब क्या? ये F क्या डिनोट करता है? F का मतलब क्या? The force of कौन सा फोर्स? एक
एक तो ये अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन, मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किन दोनों में, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, मतलब यहाँ पे जो हमें दिखाया हुआ जो फॉर्मूला है उसे ही सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है और वही हमारा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट होगा। मतलब क्या, ये F कैलकुलेट करता है, F इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब एक तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। इन दोनों में अगर दो चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये फोर्स किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मूला है, मतलब क्या, F is directly proportional to Q1 into Q2 divided by R square। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो चार्जेस हमारे सिस्टम में है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या है, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो R मतलब क्या, इन दोनों में का जो अंतर है का स्क्वायर, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स स्क्वायर, मतलब द फोर्स है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। So simply we now write down the statement and along with the formula। तो चलिए तो फिर हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। The force of attraction or repulsion, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देखा था कि टू चार्जेस में कौन सा फोर्स हो सकता है, एक तो वो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब क्या, the force of attraction or repulsion between two charges, it's nothing but F is directly proportional, किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो हमारे टू चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिवाइड में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में से जो ये दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों में दोनों का जो अंतर है R, जिसे हमने डिनोट किया था, उसका स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टेटमेंट है जो कि हमने फार्मूला यूज करके ही उसे बनाया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल है, ये मतलब क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस कौन से, Q1 और Q2 इज directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है, फॉर्मूला है, अब इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे। Therefore F equals to K Q1 Q2 upon R, but here K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, therefore force equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। So therefore SI unit of force is Newton, Q1 and Q2 are the two charges, R is the distance between two charges, and the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 Coulomb square